Okay, अस्सलाम वालेकुम everyone. I think we are good to start today's session. आज session start करते हैं. And आज की class के अंदर what we are going to do, we are going to again solve one of the past papers question. एक पूरा past paper हम लोग आज की class के अंदर solve करेंगे बच्चों. And this is May-June 2021. So a very recent paper. I really like the questions. बड़े अच्छे सवाल आए हुए इस variant के अंदर. The variant that we are solving is 1-1. So without wasting any time, let's start. Again, when we look at the instructions, the thing that you need to follow is जो आपकी बार कोड है उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखेगा. Do not write anything on the barcode, and of course calculators are not allowed in this paper. So let's start with question number 1. Benedict has a computer that is assigned an internet protocol. The IP address is given below. Now examiner is asking you to convert 167 and 214 into the binary values. So working space हमें यहाँ पे given है. I think we won't be needing that working space because मैं यहीं पे कर लेता हूँ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 128. So 128 plus 64 ऐड करूंगा तो एक्सीड कर जाएगा. So I will be adding 32. So this will become 160. Now 160 के अंदर मुझे फर्दर क्या ऐड करना होगा? 7 ऐड करना है. So 4 plus 2 plus 1. Remaining bits will be set to 0. So this is the binary value for 167. Now again we need to calculate 214. So 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 128. So 128 plus 64, the result is 128 plus 64, that is equal to 192. 192 के अंदर 32 अगर मैं ऐड करूंगा तो बच्चों that will be exceeding. अगर मैं 16 ऐड करता हूं, so I think yes we can add 16. If I add 16 over here, so that will be equal to 0, 1 will be carried. This will become 10, 10 plus 1, 11, 11 का 1 over here and 212, 210. So 210 के अंदर again I need to add 4. So 4 के ऊपर मैंने 1 लगाया and the remaining bits will be set to 0. Anas, this is beta May-June 2021. The variant is 1-1. This is the variant that जो मैंने अभी आप लोगों के WhatsApp ग्रुप के ऊपर भी सेंड कर रहा है. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. अच्छा जी भाई, मैंने कोई मिस्टेक कर दिया भाई. उमैर बता रहे हैं क्या मिस्टेक कर दी. अच्छा हाँ, सॉरी. सो वो बोलने भाई सर आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है. सो दिस विल बी 8 एंड कोई चीज कैरी नहीं जाएगी तो दिस विल बिकम 0, 1 कैरी 2. तो 16 ऐड करने के बाद 208 बन रहा है. अब 208 के अंदर मुझे फर्दर 8 ऐड करूंगा तो ये फर्दर अगर 8 ऐड करूंगा तो ये तो एक्सीड कर जाएगा. सो मुझे ऐड करना है 60. मुझे 2 और ऐड करना होगा. ठीक है, सो दिस विल बिकम 4 plus 2, that will become 214. ठीक है भाई.
नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अभी बोल रहे बच्चों अगले पार्ट के अंदर, आइडेंटिफाई वन सिमिलैरिटी बिटवीन एन आईपी एड्रेस एंड अ मैक एड्रेस। सो आप लोगों से बच्चों एक सिमिलैरिटी पूछ रहा है आपका एग्जामिनर बिटवीन IP address and a MAC address. So there are multiple similarities that we have. So अगर मैं एक similarity यहाँ पे लिखूं कोई भी, so both can be unique, दोनों यूनिक हो सकती हैं आपके पास, both can be unique, both can be represented in hexadecimal values, and both addresses, ये वाला डिफरेंस अच्छा है, both addresses are used to identify a computer device. That's a good benefit. You can only write one, कोई भी एक लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा जी, now examiner is asking you two differences. So there are multiple differences, मैंने क्लास में भी आप लोगों को लेक्चर्स में लिखवाए में, so यहाँ पे कोई भी मैं दो differences लिख देता हूँ। MAC address consists of 48 bits या 64 bits, while IP version 4 consists of 32 bits and IP version 6 consists of 128 bits. So this is one of the major difference that we have. Another difference, MAC address is assigned by manufacturer. जो डिवाइस डेवलप करता है, जो डिवाइस बनाता है जो कंपनी, तो वो मैक एड्रेस असाइन करता है, ठीक है। एंड आईपी एड्रेस इज गिवन बाय आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इट कैन ऑल्सो बी असाइंड बाय अ राउटर एज वेल। राउटर भी एक आईपी एड्रेस असाइन कर सकता है, या फिर आईएसपी भी। आप लोग अगर इंटरनेट की दुनिया के अंदर आप लोग को एक्सेस करना है तो आपको आईपी एड्रेस आपका आईएसपी आपको प्रोवाइड करता है। सो दैट वाज बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 दैट वी हैव। अच्छा सवाल था, टोटल मार्क्स वर 5। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, जूलिया इनपुट्स पर्सनल डाटा इनटू हर कंप्यूटर। फाइन। She stored 3 copies of the data using the hard disk, solid state drive, and a USB flash memory drive. Identify 3 devices Julia can use to input personal data into her computer. So there can be many devices. हमदान बता रहे हैं हमें यहाँ पे बहुत सारी devices के नाम. So yes, let me write few. Keyboard, touch screen, microphone, you can also write mouse. I think these are enough. Now in the next part, अब आप लोगों को बताना है either it's hard disk drive or it's solid state drive or it's a universal serial bus, yeah, we call it flash memory, has no moving part. So आपके पास बच्चों SSD में भी मूविंग पार्ट नहीं होता, USB के अंदर भी मूविंग पार्ट नहीं होता,
Okay, we have a question. यूसुफ देखो बेटा, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि 3 copies of the data using the hard disk, 3 input devices, उनको अपनी पर्सनल डाटा एंटर करना है इनटू हर कंप्यूटर. ही इज नॉट टॉकिंग के हार्ड डिस्क में डायरेक्टली डाटा स्टोर करना है या सॉलिड स्टेट में डायरेक्टली डाटा स्टोर करना है, कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए बोल रहा है. सो वी कैन हैव अ माइक्रोफोन. अभी मैं माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ आप लोग को पढ़ाने के लिए. मैं अभी भी माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ और ये डाटा मैं इनपुट कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर. दैट इज स्टोर्ड परमानेंटली. जूम के सर्वर के ऊपर ये डायरेक्टली रिकॉर्ड किया जा रहा है सारा डाटा. ठीक है. सो इस डोमेन के अंदर माइक्रोफोन की बात हो रही है. आई होप अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बेटा. ओके, वेयर आई वाज. मूविंग पार्ट बच्चों दोनों में नहीं होता. इट्स नॉन वॉलेटाइल. सो नॉन वॉलेटाइल तो आई थिंक तीनों ही होती है भाई. परमानेंट स्टोरेज है तीनों, नॉन वॉलेटाइल तीनों है भाई. यूजेस नैंड गेट्स. एसएसडी एंड USB flash drive both uses the NAND technology, uses magnetic properties. So hard disk drive uses the magnetic properties. It has the smallest physical size. ये तो आप लोग बताएंगे बच्चों, मैं नहीं बता रहा. सबसे छोटा साइज किसका होगा इन तीनों में से? Smallest physical size. Yes, we have right answers. 1 2 3 4 5. Yes. No. गलत जवाब भी आ रहे भाई. No. Yes, fine. So, of course, बच्चों USB has the smallest size. सबसे छोटा साइज फिजिकल किसका होता है? USB का होता है. It has the slowest read write speed. So, I think magnetic storage has the slowest read and writing speed. So, examiner is awarding you बच्चों 6 marks. Total 9 marks आप लोग को अवार्ड किए गए इन क्वेश्चन नंबर 2. आई होप आप लोगों को देखो अच्छा रिवीजन हो रहा है, आप लोगों को चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं फर्दर while we are solving the questions. Moving forward towards question number, this question having part C as well. अच्छा जी, 2 benefit of using a USB. So support different data transmission rates दो मार्क्स का क्वेश्चन है. बैकवर्ड compatible तो आई थिंक दैट्स मोर देन फाइन. और आप लोग को और भी चीजें पता ही है. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन यूज्ड इन यूएसबी कनेक्शन. तो बच्चों नाम में ही इसका आंसर छुपा है. दैट इज सीरियल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा. यूनिवर्सल सीरियल बस. सो सीरियल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा. ठीक है भाई. मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. अब क्वेश्चन नंबर 3. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फायरवॉल. लेट्स सी. A firewall can be used to keep data secure. Yes, we know that. It is stored on a computer. Given paragraph describe how the firewall operates to help keep the data secure. Complete the paragraph using the most appropriate terms from the given list. Not all terms in the list need to be used. जरूरी नहीं है बच्चों आप लोग सारे टर्म्स यूज करें. इट्स नॉट कंपल्सरी कि ऑल द टर्म्स विल बी यूज्ड. फाइन. अच्छा जी, अ फायरवॉल कैन बी डैश और डैश. तो बच्चों अगर हार्डवेयर है तो ऑफ कोर्स द नेक्स्ट ऑप्शन विल बी सॉफ्टवेयर. So a firewall can be software or hardware based. It monitors traffic between the computer and internet. इंटरनेट नहीं है सर. अगला बेस्ट ऑप्शन क्या है? नेटवर्क होगा ऑफ कोर्स. इंटरनेट नहीं है तो नेटवर्क ही होगा फिर हमारे पास. इट मॉनिटर्स द ट्रैफिक बिटवीन द कंप्यूटर एंड द नेटवर्क.
Further, the user sets dash for the traffic criteria. User sets criteria for the traffic. The firewall will dash or dash the traffic based on this. Accept or reject. So we have reject, we have accept. So firewall will accept or reject the traffic based on this traffic. It can help prevent dash and malicious software. It can help hacking. We have the term hacking prevent या फिर कोई malicious activity. Malicious software that could be threat to the security of the data. And I think we are done. So examiner is awarding us 6 marks on this part. Achha ji. Identify 3 other methods that can be used to keep the data secure. आप बच्चों अपने डाटा सिक्योर करने के वो बोल रहा है और कोई 3-4 मेथड बता दो. 3 मेथड सॉरी. So we can write encryption. We can write antivirus. We can write biometrics. We can use a strong password. We can write physical methods like door lock कर दें, CCTV कैमरा लगा दें, and so on. So you can, इससे कोई आपको restriction नहीं दी हुई, तो you can write any of the answer over here. So this completes बच्चों question number 3 right over here. ठीक है भाई, 9 marks का again question number 3 था हमारे पास. Now let's see question number 4. Simple सा सवाल है बच्चों. 2 internet risks are phishing and farming. Describe. You need to describe both phishing and farming. 6 नंबर अवार्ड कर रहे हैं बच्चों. मैं खुद डिस्क्राइब करूंगा क्योंकि एग्जामिनर इज अवार्डिंग यू 6 मार्क्स, मतलब अच्छे नंबर अवार्ड कर रहे हैं. सो लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन बाय माई सेल्फ. सो फिशिंग क्या होती है बच्चों? सिंपल वर्ड्स के अंदर, वैसे तो मैंने आप लोग को बताया हुआ है फेक ईमेल्स. और फार्मिंग क्या होती है आपके पास? फार्मिंग इज फेक वेबसाइट्स. लेकिन अब आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ पे. सो लेट्स स्टार्ट. Legitimate looking email to the user containing links or attachments. When user click on the link or open the attachment, it redirects user to a fake website. On that fake website,
users are promoted to enter their personal and sensitive information. So, bachcho, that is the best explanation about phishing. Now, when it comes to farming, so farming is actually a malicious code. Farming is actually a malicious code installed on user's computer. This code is installed, yeah, it's downloaded without users' knowledge. This code redirects user to a fake website. And again, same stuff, asking user to enter their personal and sensitive information. So, bachcho, these are the explanation for phishing and farming. ठीक है भाई? Let's move towards question number 5. Again, देखो बच्चों, अब question number 5 हमारे पास आया यहाँ पे. सर विद यूजर्स नॉलेज नहीं भाई, विदाउट यूजर नॉलेज होगा. मैंने गलती से विद लिख दिया है. फातिमा बेटा देखे ना, यहाँ लिखा हुआ है मैंने विदाउट. ठीक है. सो आई गलती से मैंने यहाँ पे विद लिख दिया था, विदाउट यूजर्स नॉलेज. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. अच्छा जी, अगेन क्वेश्चन नंबर 5. इफ यू विश यू कैन राइट इन द पॉइंट्स फॉर्म एज वेल. लेकिन अगर आप पैराग्राफ में भी लिखना चाहें तो यू कैन राइट इन पैराग्राफ फॉर्म एज वेल. मतलब इट्स टोटली अप टू यू. मतलब यू नीड टू टॉक अबाउट क्वेश्चन के अंदर, यू नीड टू टॉक अबाउट द malicious code, you need to talk about without users knowledge, you need to talk about that this code redirects to the fake website. तो ये 3 नंबर इन चीजों के. when you are talking about phishing, you need to talk about legitimate looking email, you need to talk about the links and attachments, you need to talk about that these links redirect to the user to the fake website and asking for their personal and sensitive data. ठीक है. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों. अगेन yes, of course you can write in points in the examination as well. 8 marks का क्वेश्चन है बच्चों ये. मतलब एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग यू 8 marks. मेरे हिसाब से ज्यादा मार्क्स हैं. इतने ज्यादा मार्क्स अवॉर्ड नहीं करने चाहिए थे एग्जामिनर को फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. वही सवाल है, वही सेम क्वेश्चन है, वही सेम सिनेरियो जो मैंने आप लोग को बच्चों सेंसर्स पढ़ाते वक्त सिनेरियो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. जमीलिया
has a greenhouse that she uses to grow fruits and vegetables. She needs to make sure that temperature in the greenhouse stays 25 and 30, between 25 and 30 degrees centigrade, inclusive. The system has the temperature sensor, fine, a microprocessor, fine, to maintain the temperature in the greenhouse. The system will open the window and turn the heaters off if it gets too hot. Close the windows and turn a heater on if it gets too cold. Describe how the system uses the temperature sensor and the microprocessor to maintain the temperature inside the greenhouse effect. 8 marks. Why not? जरा मैं explain करता हूं यहाँ पे. The first point will be sensor will sense the temperature inside the greenhouse. Value generated by sensor will be provided to analog to digital converter. After converting the value into digital, that value will be passed to microprocessor. Microprocessor will compare the value with pre-stored value. If temperature is too hot, microprocessor will turn off heater and window will be opened. हाँ अच्छा जी, अब ये क्लोज वाले, अच्छा ये पॉइंट लिखना कंपलसरी है, दीज 2 पॉइंट्स, इसके 2 मार्क्स हैं. अगर आपने ये पॉइंट मिस कर दिए तो देन यू विल बी स्कोरिंग 6 मार्क्स. ठीक है भाई, 6 नंबर देगा फिर एग्जाम में अगर ये पॉइंट मिस कर दिया आपने. अब आपने यहाँ पे सेकंड पॉइंट बता दें. इफ temperature gets too cold, microprocessor
will instruct to turn heater on and close window. एंड द लास्ट पॉइंट बच्चों जिसके ऊपर आप लोगों को एक आखिरी मार्क्स, एक आखिरी नंबर मिलेगा, दैट इज दिस प्रोसेस will be repeated continuously and we are done 8 marks. So an amazing question. अच्छा सवाल था बच्चों यहाँ पे. जनरली वैसे आपका एग्जामिनर आप लोगों को इतने ज्यादा मार्क्स अवार्ड नहीं करता ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. 5, 6 मैक्सिमम 6 होते हैं, बट ओवर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम आपके एग्जामिनर ने 8 मार्क्स अवार्ड करे. सो यू नीड टू टॉक, इन दोनों चीजों के बारे में आपको बात करना कंपलसरी है. 2 नंबर इस चीज के उसने दे दिए. ठीक है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6. ओके, लॉजिक गेट्स आसान सवाल है. सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं लॉजिक गेट्स के अंदर? जस्ट सॉल्व द ब्रैकेट्स. मैंने इस वाले ब्रैकेट को नंबर दे दिया एज 1, मैंने इस वाले ब्रैकेट को बच्चों नंबर दे दिया एज 2, एंड देन फिर हमें ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करना है. तो मैंने इसको नंबर दे दिया इस वाले ब्रैकेट को एज 3, एंड देन आई जस्ट नीड टू XOR विद C0. सो C0 निकाल लूं भाई पहले मैं. अच्छा, नॉट किस किस के साथ है वो भी देख लें. तो C0 है और B0 है, दोनों नॉट निकाल लेता हूं पहले, उसके बाद फिर 1 2 3 निकाल लेंगे. ओ माय गॉड, ट्रूथ टेबल नहीं है भाई, ये तो सिर्फ आई जस्ट नीड टू ड्रॉ द डायग्राम. खैर नीचे ट्रूथ टेबल में नजर आया था मुझे. यस, वी हैव द ट्रूथ टेबल. तो खैर ट्रूथ टेबल बाद में भाई, पहले ए बी एंड कर दें. सिंपल सा ये जो लॉजिक डायग्राम बनानी है, तो दिस इज टू इजी. ए और बी मैंने एंड कर दिया. नाउ सी एंड नॉट बी, सी एंड नॉट बी. सो बी के आगे मैंने लगा दिया एक नॉट गेट, एंड ये दोनों भी आपस में क्या हो रहे हैं? एंड हो रहे हैं. इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा दैट इज बीइंग ऑड. तो इन दोनों का रिजल्ट ये था मेरे पास. इन दोनों के रिजल्ट को मैंने और कर दिया. अच्छा जी, इन दोनों का रिजल्ट और हो गया. अब मुझे नॉट सी निकालना है. आई नीड टू कैलकुलेट नॉट सी, और ये पूरी स्टेटमेंट के साथ क्या हो जाएगा? XOR हो जाएगा. सो दिस इज सी, नॉट सी हो गया भाई, और ये पूरी स्टेटमेंट के साथ क्या हो रहा है? XOR हो रहा है. And that is equal to X. So examiner is awarding you 6 marks for this particular logic diagram. नहीं बेटा, ऐसा नहीं कर सकते आप. प्रॉपर जो है बस सिंपल जो डायग्राम है बस वो आपको वो करना है. ठीक है. एंड यहाँ पे लिखा हुआ भी उसने, डू नॉट सिंप्लीफाई द स्टेटमेंट्स. नो नीड टू सिंप्लीफाई द स्टेटमेंट्स. ठीक है. इन द पार्ट सी में बता रहे बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल दिया है यहाँ पे. बोले देयर आर 4 इनकरेक्ट आउटपुट्स. कौन कौन सी रॉ में इनकरेक्ट आउटपुट्स का आपको वो कैलकुलेट करना है. सो फॉर दैट यू नीड द स्टेटमेंट. आपके पास स्टेटमेंट होनी चाहिए भाई. सो लेट्स टेक दिस स्टेटमेंट डाउन.
अगर इस स्टेटमेंट को नीचे लेके चलते हैं और फिर प्रॉपरली सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, सो द फर्स्ट थिंग आई एम डूइंग, मैंने सबसे पहले यहाँ पे नॉट निकाल लिए। सो आई एम हैविंग नॉट विद सी, आई एम हैविंग नॉट विद बी, सो बी नॉट, नॉट इज अपोजिट, सो ये जीरो है तो ये क्या हो जाएगा 1 1 0 0 1 1 0 0, एंड सी नॉट विल बी 1 0 1 0 1 0 1 0. Now the first thing that I will be calculating will be A और B को क्या करवाना है, एंड करना है। तो आई नीड टू एंड A एंड B, मैंने इसको नंबर दे दिया एज 1, सो आई हैव A, आई हैव B, दोनों को एंड कर दें। 0 एंड इज मल्टीप्लाई 0 0 0 0 0 1 1. नाउ लेट्स कैलकुलेट बच्चों C एंड नॉट B, इसको नंबर 2 कर दें। सो दिस इज C एंड दिस इज नॉट B, इन दोनों को एंड कर दें, उसको नंबर दे दिया मैंने एज 2, मल्टीप्लाई 0 1 0 0 0 1 0 0. नाउ ये 1 और 2 आपस में क्या हो रहे हैं, दे आर बीइंग और, तो मैंने इसको ओवरऑल और करके नंबर दे दिया एज 3, आई असाइन दिस नंबर एज 3, सो आई हैव 1 आई हैव 2, इन दोनों को क्या करना है, और करना है। और इस अगर एक वैल्यू भी 1 है, द आउटपुट विल बी 1, सो 0 1 0 0 0 1 1 1. नाउ जो 3 का रिजल्ट आ रहा है मेरे पास, दैट द रिजल्ट इज 3, ये स्टेटमेंट पूरे सी नॉट के साथ क्या हो रही है, इट्स बीइंग जॉर्ड, ये जॉर हो रही है सी नॉट के साथ। सो सी नॉट भी है, 3 भी है, तो एंड दैट इज इक्वल टू एक्स, फाइनल रिजल्ट है हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे इसको एक्स का नाम दिया एंड आई कैलकुलेटेड, मैंने यहाँ पे जॉर करा। तो जॉर के अंदर क्या होता है आपके पास, इफ यू आर हैविंग डिफरेंट इनपुट द रिजल्ट विल बी 1, और सेम इनपुट के ऊपर आपके पास आंसर आता है 0, सो दिस विल बी 1 1 1 0 1 1 0 1, so this will be my final answer. सही किया ना मैंने, एक दफा वापस देख लो, 1 1 1 0 1 1 0 1, ठीक हो गया, परफेक्ट। नाउ अब देखिए बच्चों, बोले 4 एरर्स हैं, सो रॉ 1 यू कैन सी, पहला एरर ये सेम होने चाहिए आपके पास, तो रॉ 1 के अंदर आपके पास एरर है, मैंने यहाँ पे लिख दिया रॉ 1, ये ठीक है भाई, एरर नहीं है, फाइन। ये रॉ 3 में भी एरर है, रॉ 3 also having an error, then we are having रॉ 4 में भी एरर है, we are having an error in raw 4 and we are having an error in raw 5, raw 5 में भी एरर है, you can see raw 5 में भी एरर है, then same same same. so थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन था ये लॉजिक गेट का, आज तक मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं है, लेकिन अगेन अब कर लिया सॉल्व, तो आसान था, कोई एज सच कोई बहुत मुश्किल लॉजिक नहीं थी, आपको करेक्ट आंसर निकाल के कंपेयर करना था विद दैट पर्टिकुलर आंसर। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पे कितने क्वेश्चंस हैं, ओके 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। A music company has a website that allows the user to stream music. Music is stored in sound files. The sound files are compressed using lossless compression. Describe how the sound file are compressed using lossless compression.
So 4 नंबर आपका एग्जामिनर आपको अवार्ड कर रहा है. लेट्स एक्सप्लेन दिस स्टफ. Similar pattern of sound will be grouped together and a unique code will be assigned to that pattern. Data with that, sorry, number of repetition of that pattern will be noted as well. Sound pattern now will be transmitted only once along with the code containing the repetition pattern. Sure, I will share this PDF on the group as well. At receiver side, sound will be decompressed and no loss of data will be observed. Quality of sound remain same and original file will be retained. ठीक है बच्चों, आगे बोल रहे state one reason why music company could compress the sound file using the lossless rather than lossy compression technique. एक टेक्निक बोल रहे बच्चों, एक एडवांटेज बोल रहे कि लॉसलेस क्यों यूज कर रहे हैं. सो टू maintain the quality of sound. One benefit the user, the music company, one benefit to the user
of the music company compressing the sound file. यूजर को क्या फायदा होगा बच्चों कॉम्प्रेस करने का? easy to transfer file. One drawback of the company using lossless rather than lossy compression technique for the sound. File size file size will be greater. Larger will be greater as compared to lossy का आपका file size क्या होता है 90% तक आप अपने डेटा को कॉम्प कर देते हैं. So that's the advantage when you are using that technique. ये बड़ा सवाल है ये. Describe how a web page for a website is requested and displayed on user's computer. So ये भी लिखवा ही देता हूँ बच्चों. अच्छा सवाल है. User enter URL in the web browser. Web browser request DNS, that is domain name server for the respected for the corresponding IP address. If found, DNS returns the IP address to the web browser. Web browser request on that particular IP address of web server. Web server responds back sending the requested web pages. Web browser interpret the web pages and displays on user screen.
So this is how बच्चों a web page is displayed on the user's screen. अच्छा, ये इंटरप्रेट जरूर लिखेगा. कीवर्ड्स अगर मैं बताऊं तो you need to talk about the DNS, you need to talk about the corresponding IP, you need to talk agar if found then that IP is returned to the web browser, then you need to talk about that web browser request on that particular IP address of the web server, then you need to talk about that web server response back requested sending the requested web pages, and web browser बच्चों उसको interpret करेगा web pages को and displays on the user screen. A perfect reply to the examiner for, अगर ये 5 नंबर का भी सवाल होता या 6 नंबर का भी सवाल होता तो सेम आंसर आप लोग यहाँ पे लिखेंगे. Okay, web server that hosts the website suffers denial of service attack. Explain why this will prevent user from accessing the website. Because server will be flooded with fake request original request will not be entertained. Server bandwidth will be totally consumed and server will crash. ठीक है भाई, तो हमने डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक की भी यहाँ पे बात कर ली. नाउ मूविंग फर्दर फॉरवर्ड, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल. 4 7-bit binary pattern are given. Identify each 8-bit binary value has been sent using odd or even parity by writing odd or even in the given column. So we just need to count number of ones. 1 2 3. So that is odd parity. 1 2 3. Odd parity. 1 2 even. 1 2 3 4 even. ऐसे सवाल दिए गए, इतने अच्छे सवाल हैं, 4 नंबर अवार्ड कर रहे हैं आपका एग्जामिनर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अच्छा जी, एन एरर मे नॉट बी डिटेक्टेड व्हेन यूजिंग अ पैरिटी चेक. आइडेंटिफाई व्हाई an error may not be detected if two opposite bits are transposed. Transpose मतलब swap हो जाए. Example, ये दोनों बिट्स क्या हो गई, स्वैप कर गई. सो 1 1 0 0. सो एरर है लेकिन स्टिल डिटेक्ट नहीं होगा बच्चों. ठीक है. 4 marks. Describe how data is sent using parallel half duplex ट्रांसमिशन. 4 नंबर क्यों अवार्ड कर रहे हैं, ये तो एक लाइन का आंसर है. I don't know why examiner is awarding you 4 marks for this particular part. मतलब सिंपल सा जवाब है ये तो बिल्कुल.
multiple bits are sent at the same time using multiple wires. Data is transmitted in both directions. Half duplex है, data is transmitted in both directions, but only one direction at a time. और बच्चों आई थिंक 4 नंबर आई थिंक दैट्स मोर देन फाइन. 2 नंबर आई थिंक इसको अवॉर्ड करेगा, 2 नंबर इसके ऊपर अवॉर्ड करेगा. इसके अलावा तो पैरेलल हाफ डुप्लेक्स के बारे में मैं और फर्दर कमेंट नहीं कर सकता. सिंपली मतलब बिल्कुल यही बातें जो दैट यू शुड राइट ओवर हियर. अच्छा जी, स्टेट 2 ड्रॉबैक्स यूजिंग पैरेलल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा. लिमिटेड डिस्टेंस, मोर चांसेस ऑफ एरर्स बिकॉज बिट्स आपकी क्या होती है, स्क्यूड हो जाती हैं आपके पास. मोर चांसेस ऑफ एरर्स, बिट्स में skewed. सो दैट्स इट बच्चों. यहाँ पे हमारा ये वेरिएंट पूरा कंप्लीट होता है. हमने पूरा पेपर यहाँ पे सॉल्व करा. अराउंड 1 आवर हमें बच्चों 1 घंटा लगा फॉर सॉल्विंग दिस पेपर. पेपर में आप लोग के पास टाइम बहुत होता है. टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. आप लोग का पेपर 1 आवर 45 मिनट्स का पेपर होगा. मैक्सिमम ऑन एन एवरेज बच्चा 1 आवर 15 मिनट्स के अंदर अंदर पेपर सॉल्व कर लेता है. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास हाफ आवर स्टिल अवेलेबल होता है. आधा घंटा आपके पास होता है. सो या हाफ आवर भी आप छोड़ें तो अगर 15 मिनट्स भी आपके पास होते, सो यू डोंट नीड टू रश. वापस से रिवाइज करें, देखें, अपने आंसर्स को देखें, उनको रिकॉल करें, रीचेक करें और पूरा टाइम प्रॉपर्ली कंज्यूम किया करें. ठीक है. अगर कोई आंसर आप लोगों ने आप समझ रहे कि और फर्दर इसके अंदर एडिशन हो सकता है, कोई और फर्दर पॉइंट ऐड किया जा सकता है, तो उन आंसर्स को वेरीफाई करेगा, रीड करेगा, रीफ्रेश कर सकते हैं. सो टाइम लगाएगा वापसी अपने पेपर्स के ऊपर. वैसे इन जनरल 1 आवर 15 टू 30 मिनट्स में आपका पेपर हो जाएगा. 1 आवर 15 मिनट्स में आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक अच्छे बच्चे ऑन एन एवरेज इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं. सो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं बच्चों. इंशाल्लाह अगली क्लास में एक और पास पेपर के साथ आएंगे और एक और पास पेपर हम लोग पूरा क्लास के अंदर ही सॉल्व करेंगे. सो थैंक यू. अल्लाह हाफिज. टेक केयर एंड स्टे सेफ.